Afterwards, whatever is not explained to you, I will send it solution. You go through it so that there won't be any doubt. Okay. Have you practiced any sum, or you want me to do all the sums? So we have practiced from other sheet. Oh, that means from this I have to explain you everything. Correct. So other sheet का भी solution and इसका भी आगे till 100 का whatever I don't complete I will give you. 1 to 100 from both the sheet you have to practice. The magnetic force on the charged particle moving in the field does not work because does not work means does no work. It should be does no work because why it is like that? Magnetic force on charged particle move in a field does no work. Hello. चलो बोलो थोड़ा तो दिमाग लगाओ क्योंकि you have done so many chapters ना. Now this will be discussion like theory है. Option A. क्यों option A? कौन बोला option A right है? But why it is like option A? Because others are not true. So you are telling or you know the concepts? Others are not true. Very good. If others are not true by default also I can write it. Or suppose I know everything. I know kinetic energy का change is called work done ना? Yes, sir. If no work done means kinetic energy is constant, no? Yes. Yes, sir. Circular motion में speed तो constant होता है ना? Yes, sir. So therefore answer A. I think followed. Now why answer A? Yes. Yes, sir. Okay. Option 62. In the following diagram, so I will not rush. Whatever I can complete, I will complete. Remaining I will send you the solution. You can go through it. So it will be tough task. So many things you have to work at a time. In the 67 following, was homework, right? which one was homework? Till 67. Yeah. I had told till 67 homework. Okay. Correct. याद आ गया मुझे 67 तक. No doubt, sir. No doubt till 67. Can I go ahead to 68? Yes, sir. Thank you अवाना. टाइम बच गया अपना. Thank you. 68 से नया टाइप चालू हो गया. In a cyclotron, radius of circular path of charged particle increases. Because both omega and v increases. Only omega increases. V remains constant. V increases, omega remains constant. V increases, omega decreases. Is time period constant in cyclotron? Yes, in cyclotron time period is constant. थोड़ा लगता है डोज ज्यादा हो गया आप लोगों को. In cyclotron 2 pi m upon qb is time period or not? Yes, sir. So it is constant na for given charge. Yes, sir. If this is constant means omega is constant, no? Isn't it? Yes. Yes. तो लोग ने बोला रेडियस क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज v इंक्रीज होता है ना. अभी आप बोले सर आपको कैसा मालूम? देखो ना, QVB is mv square by r. एक v कैंसल. So QRB is mv. Q constant, V constant, M constant. So can I say V is proportional to R? Yes, sir. So V will increase. Therefore, R is increasing. Option C. Okay. Yes. 69. Inside a cyclotron, a charged particle is subjected to both electric and magnetic field
इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी किसका वजह से? काइनेटिक एनर्जी किसका वजह से होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ा रहेगा तो वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है ना, लिखा था मैंने। एक्सेलरेट्स करता है मतलब वी को बढ़ाता है ना, ये Yes, sir. मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है ना इनडायरेक्टली। Yes. और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उसको गोल घुमाता है ना खाली एट कांस्टेंट वोल्टेज, है ना, कांस्टेंट Yes, वेलोसिटी। sir. Yes. So what will be the answer? Which field is increasing the kinetic energy? Electric. Only the electric. Electric field. Only the electric field. A option. ये theoretical वाला dangerous था। 70. Cyclotron is used to accelerate charged particle. This is true. Hello? Accelerate charged particle. That is true. Yes. Yes, क्योंकि sir. Q रहेगा तो ही QV भी आएगा ना। Yeah. Then both positive and negative क्या खाली positive? उसको तो चार्ज से मतलब है ना, कोई भी रहने दो। फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बी ऑप्शन, बी। दिस इज आल्सो गुड सम। 71. A charged particle of charge q, mass m, charged particle of charge q, mass m, is under action of electric field which is E naught I cap and magnetic field B naught I cap with velocity of V naught j cap. The speed of particle becomes root of 5 by 2 times V naught. मस्त समझिए। After what time? मस्त समझिए। What is meaning of j cap? Y axis. हाँ मतलब ये चार्ज इज गोइंग along y axis ना, with magnitude V naught, and this electric field is E naught along x axis, magnetic field is B naught along x axis। ये बात हजम हुआ क्या आपको? Yes, sir. ओके। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, और ये परपेंडिकुलर जा रहा है, करेक्ट? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who will apply force on perpendicular direction? Because if there is force, then only velocity will change. If there is no force, no velocity will change. So I have to check electrical field is accelerating or magnetic or both. क्योंकि एक बार acceleration मिला, then V is equals to U plus AT करके I can do. U is V naught, acceleration मिलेगा, after what time it will become root of 5 times V naught. I can solve that. So can you tell me which one is giving acceleration? Both or only one? Only electric. Pardon? Only electric. E and B are acting along x-axis and V is along y. That means V is perpendicular to both E and B. है ना? हेलो? Yes, sir. तो ऐसा वाला भी इसको एक्सेलरेशन मिलेगा और इसका वजह से y भी मिलेगा ना, दोनों। सो कैन आई से हियर, एक मिनट ध्यान से देखो, it will have net velocity due to acceleration along x also, due to acceleration along y also. So net v will be root of vx square plus vy square. Can you tell me what is initial velocity along y? Initial velocity along y? Pardon? V naught. Yes, superb. V naught. V naught एकदम perfect. And acceleration along
Y will be how much? Acceleration along Y will be how much? Zero ना, बिकॉज V और B का तो इसको परपेंडिकुलर Z पे एक्ट होएगा ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग Y जीरो नो. Yes, sir. तो Vy सेम एज V नॉट ही होगा ना. ये समझ गया इतना? Yes, sir. अभी एक्स एक्सिस पे देखते हैं कौन दे रहा है फोर्स. प्लीज कॉपी दिस मच. सी V इज अलोंग Y, B इज अलोंग X, तो फोर्स इसका अलोंग Z. तो Y पे देयर इज नो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल रिमेन सेम टू सेम. और X तो देगा E नॉट, तो X पे देगा फोर्स. इतना कॉपी करो. Then initial velocity along X equal to 0. So V along X is acceleration along X into time. Acceleration is charge QE, that is force upon mass into time. Everybody followed Vy and Vx wala case? Yes, sir. But V is Vx square plus Vy square. Two vectors are perpendicular. Result is Pythagoras theorem. And V, they are telling it is root of 5 by 2 V naught. Vx you got QE upon M into T the whole square, plus Vy is V naught the whole square root of this. Copy. Now I'm squaring both the sides. Squaring both the sides. We get root 5 is 5, 2 is 4, V naught square. This is QET the whole square plus V naught square. So 5 by 4 V naught square minus V naught square is QE by M into T the whole square. That will become 1 by 4 V naught square equals to QEM into T the whole square. Taking square root, V naught upon 2 is QE by M into T. Therefore, T is M into V naught upon 2 times QE. M into V naught upon Q times 2 times QE. QE naught. E is E naught. Option B. Beautiful sum it was. Done? Yes, completed? Sir, just come.
Done, sir. Can anybody suggest what will be the path? Circular क्या हेलिक्स here? देखो ये फील्ड और ये V, ये इसको गोल घुमाएगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स सीधा खींचेगा, तो हेलिक्स आएगा ना इसमें. तो sometimes they can ask what will Yes. be helix. 72. Figure shows 4 direction for the velocity vector v bar of positively charged particle moving through uniform electric field. Okay. And B, दोनों भी है. Uniform electric field and magnetic field v bar of all the 4 direction which results in net force of 0. Figure shows 4 direction for velocity vector v bar of positively charged particle moving through uniform electric field E bar and uniform magnetic field V bar of all 4 direction which will result net force to be 0. 3, 2, 4 V bar. The velocity V bar, V bar, V bar, V bar everywhere. अभी एक डायरेक्शन ऐसा दिया है और इधर डॉट दिखाया है ई बार, डॉट ही दिखा है ना, डॉट, and that is E bar where the net force will be 0. Net force where it will become 0 we want. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Where the net force will become 0, which results in net force to be 0. If you see this fourth charge, it is moving downward, na? Correct? Yes, sir. और इधर फील्ड ये डॉट दिखाया है, बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार ऐसा दिखाया है. So if इलेक्ट्रिक वाला फोर्स एंड मैग्नेटिक वाला फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ही 0 हो सकता है ना, एंड ऑपोजिट. हेलो? Yes, sir. सो दिस 4 के लिए ये डाउनवर्ड डॉट 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 हो जाएगा ना थ्रू आउट. तो थोड़ा डायग्राम बराबर नहीं प्रिंटेड है. दिस वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, field is dot means outward. So for fourth one and E इसका राइट में, तो जरा देखता हूं मैं what will be direct. ये E राइट में, E is on the right, so electrical force will be on the right. This is true. अभी ये दोनों का मैग्नेटिक देखता हूं. F magnetic will be Q P bar cross B bar का डायरेक्शन. This is minus J cap डाउनवर्ड वाला फोर्थ के लिए. Yes, sir. Yes, sir. J cap. और B किधर है? प्लस के कैप. डॉट है तो प्लस के कैप हो गया ना. Yes. व्हाट इज J क्रॉस के? Yes. I. I. मतलब माइनस I पे आया ना मैग्नेटिक फोर्स, बराबर. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक राइट पे आ रहा है ना. Yes, sir. सो कैन आई से फॉर फोर्थ वाला, सी आई डिडंट थॉट ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि इसमें कैसा फील्ड को पैरेलल है तो ये 0 होने ही वाला नहीं है.
क्योंकि इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होएगा, मैग्नेटिक है ही नहीं ना। आर यू गेटिंग में? इससे खाली मैंने इसको देखा पहला, और इधर इलेक्ट्रिक ही नहीं है, तो इसको खाली मैग्नेटिक मिलेगा, जीरो कैसा होएगा? फोर्थ पे दोनों का मजा है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों है ना इस पे। Yes, Yes. sir. So for fourth, electric force is along positive x and magnetic force is along negative x. Then only chances are there it can become zero if they are equal opposite. A Yes, is the sir. option. A is the option. Next is very important sum. It has been asked in the exam. Can I clear this? Everybody has followed meaning of direction. Yes, sir. Okay. $73. When a proton is released from rest in a room, it starts with initial acceleration a0 towards west. Proton means positive charge is going towards west when it is released in a room. When a proton is released from rest in a room, it starts moving towards west. When it is projected towards north with speed v0. When same proton is projected towards north with speed v0, it moves with initial acceleration of 3a0 towards west. 3a0 towards west. The electric and magnetic field in the room are, okay. Electric and magnetic field in the room are. किसको कुछ भी समझा? मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं समझा है मुझे। आप लोगों को कुछ समझा? We have to find the relation. No, we have to find electric field का magnitude, direction, magnitude of magnetic field and direction, ऐसा। चार्ज इज पॉजिटिव, पहले उसको रूम में छोड़ा तो वो वेस्ट में जाने लगा, लेकिन वही चार्ज को जब भी हम लोग ने नॉर्थ में छोड़ा विथ वेलोसिटी v0 तो भी वेस्ट पे जा रहा है, लेकिन 3 टाइम्स एक्सेलरेशन हो गया, ऐसा बोल रहे हो लोग। ये परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है ना, ये वेस्ट को, Yes. बराबर ना? वेस्ट को परपेंडिकुलर अगर आया मतलब देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, in first case charge is
released means initially at rest. Yes, sir. If at rest, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा क्या? हम लोग ने 3 पॉइंट लिखा है. नो चार्ज फोर्स 0, नो वी फोर्स 0, बी एंड बी पैरेलल फोर्स 0. बराबर ना? Yes. तो इसको जब रेस्ट पे है, इसका मतलब क्लियर कट बी कुछ नहीं कर सकता है ना इसको, फिर भी एक्सेलरेट हो रहा है ना ये वेस्ट में. तो कौन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? Electric. हाँ, पहला ये समझना बहुत जरूरी है. So in first case, charge is released means initially at rest. Hence, if it moves, then it is only due to electric force, not followed. हेलो, Follow. फॉलो? चलो, सबको समझा इतना? बराबर. Yes, sir. It is moving due to electric force. What is formula for force? Mass into acceleration or not? Yes, sir. And electric force means QE is QE. mass into acceleration or not? So can I say electric field is MO upon charge Q or not? Yes, sir. Yes, sir. And ये चार्ज पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के जितना है, वो भी वेस्ट में एक्ट हो रहा है ना, बिकॉज चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. बराबर. अभी किसको किसको फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा? So can you explain direction? What is direction of force? It is in the direction of field. So body is moving in the west, so force is also in the west for positive charge. If this is field and this is positive charge, where will be the force? Along the field now? Yes, sir. And if it is negative charge, तो उल्टा जाएगा ये. तो पहला केस में अगर प्रोटॉन पॉजिटिव वेस्ट पे जाएगा, मतलब फोर्स भी वेस्ट पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट पे है ना. समझा? Yes, sir. Yes, sir. वापस देखो सब लोग. They are telling when charge is released, first case, that is release मतलब छोड़ दिया ना आपने, initially at rest ना. Magnetic force will act only when moving charge enters, no? Yes, sir. Hence only force if acting, अगर एक्ट हो रहा है तो, if acting, एक तो ग्रेविटेशनल होगा, ग्रेविटेशनल तो नीचे खींचना चाहिए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं वेस्ट पे गया, so only force acting is electric. ये पहला you should digest properly. Correct? Yes, sir. Therefore, electric force is QE in direction of motion. I think this now you followed. But every force is ma by Newton's second law. नहीं समझ में आया? अभी बोलो. Followed, sir. So ma is q into e. Acceleration is a naught. So electric field acting is ma naught q. Ma naught q is ma naught e in west because motion in west. नसीब खराब है, दो है ऑप्शन सी और डी वेस्ट में, तो सेकंड वाला चेक करना ही पड़ेगा. पहले इतना लिख लो, मतलब आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है. कॉपी. आफ्टर द लेक्चर यू ऑल विल वेट फॉर 2 minutes. कुछ तो मुझे पूछना है.
Once you are done, please tell me so that I can clear it off. Shall I clear it? Done, sir. Okay. When charge is projected in north, it still moves in west, but with acceleration of 3 a acceleration of 3a0, that is extra 2a0 must have been produced by magnetic field, correct? Tell me now, how many of you have followed till this? Yes, sir, followed. Projected with velocity means अभी magnetic force act होएगा अगर है तो. Act क्यों हो गया? Because it is going to the west. You have projected to the north. But with 3a0, that means extra कितना? 2a0. बराबर? Yes. Yes, Can I sir. say my magnetic force, which is Q into V bar cross B bar, is this in the west direction? And this is in north. North means which cap? I can. North I J cap. cap. J cap. They get sir. J. North, south, east, west, no? तो ये नॉर्थ मतलब ऐसा रहेगा ना, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा होता है ना. नॉर्थ इज के क्या, इनवर्ड सो माइनस, वेस्ट इज माइनस ऑफ आई क्या, ऐसा. तो अभी मुझे चाहिए व्हाट विल बी बी टू गिव मी आंसर एस माइनस आई. आई जे के, के का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे विल ओनली गिव यू आई, ये तो फिक्स है Yes, है ना. Yes, sir. K cross J, if I do K cross minus J, what is K cross minus J? K cross J, I. K cross J is I. Minus minus will become plus, है ना. Yes, yes. Yes, sir. So north inward, it is moving upward. K cross V is in K cross direction. What should be the field? If I take K cross J, I get minus I. Minus minus plus will become minus I. Hello? Hello? Yes, sir. Yes. It should be minus J now, because then only minus minus plus and K cross J, if you do, it will become minus I. Na? You are going in clockwise. Yes, sir. Okay. So can I say then magnetic field is in downward direction? yes, Not. Yes. नहीं समझा मतलब. इतना तो समझा मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं तो खाली ए नॉट रहता ना. ये तो समझ गया. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दिया ना 2a0 टू द वेस्ट में. हाँ, sir. मतलब उसका फोर्स वेस्ट में है ना, रिजल्टेंट. Yes, sir. वेस्ट Sir. मतलब माइनस आई कैप ना. Yes. नॉर्थ Yes. साउथ को हम लोग के लेते हैं ना, आउटवर्ड इनवर्ड ना. Yes, sir. तो इट्स अप टू यू टू लिसन अंडरस्टैंड. नहीं तो जे किसको भी नाम दो आप, इसको जे दो
जे कैप बोलो तो भी चलेगा, लेकिन ये ऐसा प्लेन में रहता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ साउथ, ये पहले भी बताया मैंने आपको। Yes, sir. हाँ ओके, एक सेकेंड रुको, इतना लिखो जरा। देखो डायरेक्शन वाला बुक में मिलेगा नहीं किधर भी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इफ नॉट वी हैव टू क्लियर एवरीथिंग। इतना लिखो पहला, फिर समझाता हूँ आगे। Once you write this, please tell. Shall I clear? Yes, sir. Yes, sir. Done. Now, when you say north, south, east, west, actually speaking, it is in horizontal plane ऐसा, ये north, south, east, west ऐसा रहता है, ऐसा vertically upward नहीं रहता, same plane में होता है horizontal. So result I want force here in this direction, B is here, B is missing. F bar magnetic wala is always Q into V bar cross V bar. Now F I want along minus I cap, V is along minus K cap. This we are not knowing, but definitely I know K J का result आता है I. तो अगर K J लिया खाली तो क्या होएगा देखो, I cap J cap K cap, K cross J you are going in anti clockwise है ना, क्या clockwise K cross J Clockwise. clockwise, so it will become what, minus I. Yes, sir. This minus and minus will become plus, so I should have minus J, so that minus I is K minus minus plus K bar cross J bar will become minus I bar. Yes, sir. तो इसका मतलब field is downward or not along minus J, up is Yes, plus sir. J, downward. Okay, अभी इसका value, magnetic force is E V B, which is nothing but mass into that 2a naught का acceleration. Therefore B is m 2a naught upon EV in downward direction. Check करो है क्या ऐसा? Option D. हाँ ब्यूटीफुल है ये, 99% student went wrong. This was asked in 2013 AIP PMT. Shall I remove it now? Yes, sir. Done. किसका तो क्लास है शायद ना 9 बजे. Jasmita, you have class at 9? Somebody had told me class, so we kept 8 to 9. Huh? Who is having class at 9 o'clock? Yes, sir. Mine. Mine means who? Sir, Jasmita. Acha, acha. So today we'll stop here.